वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशल पे वोकल। और आज हम हैं कोमल जी के साथ, जो कि हैं डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ विमेन वेलनेस ब्रांड ब्लू केयर्स। और हम पूछेंगे कोमल जी से कि ये ब्रांड की शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी बैक स्टोरी क्या है, आगे इसके बारे में फ्यूचर प्लान्स क्या है और उनकी लाइफ में क्या क्या मोड़ आए ब्लू केयर्स को शुरू करने के बाद। लेट्स स्टार्ट। हाय कोमल जी, थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम। Please call me Komal. एंड टू बिगिन विथ, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा, आई वॉज क्वाइट अम्यूज टू सी अ वुमेन एंटरप्रेन्योर इन द सेगमेंट ऑफ कॉन्डम्स। एंड डेफिनेटली अभी आपसे बात करके पता चला कि ये सिर्फ कॉन्डम्स तक ही सीमित नहीं रहने वाला है, काफ़ी और भी प्रोडक्ट्स इसमें जुड़ने वाले हैं। बट लेट्स स्टार्ट with your product right now which is Bleu Cares condoms। and जहाँ तक मैंने आर्टिकल्स एंड स्टोरीज पढ़े हैं, कहीं ना कहीं इस पूरे ब्रांड को, इस पूरे बिजनेस को शुरू करने की जो इंस्पिरेशन है, इट कम्स फ्रॉम योर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। Exactly. तो उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। So yeah, it has started because of my own personal suffering, my body reaction to the chemicals that's been added into the condoms, regular condoms available in the market. And when I was, agar if I go back to it, after when I started having these estrogen levels becoming low in my body was going into the phase of a menopausal transition. So there was a dryness in my vagina, and because of that, I was having a lot of irritation and itching while using the condom specifically. So this was my first symptoms that I had during my journey of the menopause. And from there I started and I picked it up. And then I looked out for the solutions. I tried reaching out to a lot other women to understand their issues and if they were also facing such issues, because हमारे कंट्री में ये बात ही नहीं होती। जैसे कि आपने अभी कहा हमारे कंट्री में ये बात नहीं होती, वहीं से ये सवाल भी आता है कि इश्यूज़ तो बहुत सारे मैंने भी बहुत फेस किया है विद ऑल दीज कॉन्डम्स अवेलेबल इन द मार्केट, ड्राइनेस, इचीनेस एंड ऑल दैट स्टफ, or some kind of irritation, pain or something like that. But who jumps into making condoms? Someone has to. Someone has to. It's all I can say. Maybe the suffering and the irritation was unbearable, and to the extent that I was looking out for a lot of solutions. Right. I was very comfortable into my previous work and journey. It was not that it was something that I had prepared for myself as a path to do this. Condom का कोई मेरा set rule या बचपन का कोई ambition नहीं रहा हुआ है. So हाँ, उस टाइम पे suffering बहुत ज़्यादा थी, available options कुछ नहीं थे, and I am not a person जो कि birth control pills पे believe करता है और abortion पे. As a personal level, I do not believe into either of the two. So then condom is a very good solution. Yes. Right. There are people I have nothing against them, but मैं personally उसमें एकदम भी believe नहीं करती in either of the birth control pills, because वो body के लिए बहुत harmful रहता है in a longer run, and neither do this abortion. Right. So condom is the only option, and जब वो condom जो country में available है वो आपको suit नहीं कर रहा है. Right. So what is the option left for a married couple to to have a better sex life then? And then when you started thinking about getting into this segment, यहाँ पे कुछ करने का, business run करने का, तो फिर ये आपने कैसे फैसला लिया कि वीगन कॉन्डम होना चाहिए, प्रोडक्ट कुछ उसका जो बेस प्रोडक्ट है वो कुछ और होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए? So the problem started because as a woman, जो मुझे प्रॉब्लम थी, जो कोई बात नहीं करती है, एज आई वाज सेइंग कि हम बहुत रिसर्च किए थे, वी रीच्ड आउट टू लॉट ऑफ वुमेन, हमने एक सर्वे रोल आउट किया जिसमें अराउंड 500-600 ऑड वुमेन पार्टिसिपेटेड, एंड अराउंड मोर देन 70% एडमिटेड कि उनको भी ये प्रॉब्लम है. राइट. पेन ड्यूरिंग द सेक्स, ड्राइनेस, इचिंग, इरिटेशन एंड ऑल दैट विद द यूसेज ऑफ अ कॉन्डम. राइट. Irrespective of the condom, और भी अदर इश्यूज है जिसके कारण में द सिमिलर सफरिंग्स आर बीइंग बोर्न, बट उसके बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं. सो व्हेन आई रीच्ड आउट टू देम एंड अंडरस्टूड कि ये प्रॉब्लम तो बहुत कॉमन है,
मगर कॉन्डम्स के बारे में जब कोई बात होती है तो ये तो खाली एक प्लेजर होता है, राइट जो कि men talk about it, and because it's a male dominated industry, it's something कि they are never bothered about the issues. राइट आज अगर अपने until and unless sanitary pads का वुमेन नहीं आती तो आई थिंक दे वुड हैव बीन वन ऑफ दोज अनकम्फर्टेबल वंस जो हम बचपन में यूज़ करते आए हैं. राइट बट नाउ डेज विद द menstrual cups, with the all these thinner ones and those organic ones, we are having much better and rash free periods. राइट राइट So similarly यहाँ पे भी we were needing something, राइट राइट. and that's how we got into it. Let's talk about the the raw material that you're using here. So अगर हम बात करेंगे procurement level पे, we have taken every small issues into consideration, starting from the procurement. We procure latex from a very sustainable forest जहाँ पे indiscriminate uses of chemicals नहीं है. Starting from there, then when we go into making the condom product, we do not add any accelerators and the glycerine and all these other chemicals which react with your body and causes, because glycerine is nothing else but a sugar alcohol Okay. or parabens. We do not, or the flavors, which is very strange. India में इतने flavors क्यों हैं? So we do not do any such things. Yeah. Our condoms have lesser protein levels in compared to the other brands available in the market, and that's why we have like women who do not face irritation, itching, rashes Right. after using our condoms. Right. Yeah. So as we are discussing about the raw material that you are using and the conventional condoms जो हमारे market में मिलते हैं, जहाँ उनसे औरतों को इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, आई एम श्योर मर्दों को भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती होंगी. Absolutely, and that's why our condoms are free from benzocaine. Benzocaine is nothing but the local anesthetic. It gives you a long-lasting pleasure, but do we really want to use that into our private areas? Right. Are we really prepared for it? As you were saying, it's a kind of local anesthesia. Yeah, it's a local anesthesia, and there has been a lot of complaints. But are the companies listening to it? Right. The point is that. Right, right. So, when was the inception of Bleu Cares? Blue, we started launched in 2020, just before the pandemic. राइट. और तब से लेकर अब तक कितना एफर्ट डाला है? लाइक ऑब्वियसली बिगनिंग ऑफ द कंपनी में तो रिसर्च जाता ही है, पर उसके बाद वंस यू हैव स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट्स, आपके कंज्यूमर्स हैं, गेटिंग द फीडबैक, तब से लेकर अब तक कितना रिसर्च में और इन्वेस्टमेंट किया है? I would say a lot, because हम काफ़ी बार after talking to our customers and consumers काफ़ी कुछ समझ में आया है कि what are their core problems. Women as a women wellness brand, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हम एक condom brand है. Right. It is more of a women wellness brand, and women की क्या issues है जो mid age women suffer करती है. Right. आज अगर आप देखोगे तो सारी की सारी कंपनियाँ they focus more for the women जिनको periods PCOD होता है या infertility, and then once a child is born, there is nothing for that woman. Right. So where does that woman go? What is expected for that woman? Right. She cannot remain always young. Yeah. So we were always with that TG. When we launched the condoms also, it was that TG for the Right. mid-age matured women TG. And then we have done a lot of research. We've reached out a lot. We talk a lot with our customers. My customers can vouch कि काफ़ी बार तो they have spoken to me. And like one-on-one, I have a lot of conversation with them to understand what their pain points are. Right. To understand what are their requirements, so that as a company we can keep on solving and pivoting and bringing out the solutions which they want. Right. मैं यहाँ पे चाहूँगी कि जो हमारे वीडियोस को देख रहे हैं वो इसकी पैकेजिंग देखें. इट्स नॉट अ वेरी पैकेजिंग जो हमारे ब्लू कॉन्डम्स की है, इट्स नॉट समथिंग वेरी कन्वेंशनल जो हम मार्केट में देखते हैं. देयर इज़ अ सेक्सी वुमेन आउट देयर और अ मैन अप्रोचिंग अ वुमेन, नॉट समथिंग लाइक दैट. तो ये कहाँ से मतलब इस डिसीजन पे आप कैसे पहुँचे? बिकॉज दिस इज़ टोटली समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट, एंड गोइंग आउट ऑफ द बॉक्स आई थिंक इट कैन हैम्पर योर बिजनेस ऑल्सो. Well, again, when I go back to my research,
This was a conscious call taken. So this is the new packaging. अगर Okay. हमारा पुराना packaging देखेंगे, it was a very plain, simple white color का box with a blue band on it. And the reasons were very simple. 2 reasons से था. एक तो as a woman मुझे बहुत uncomfortable लगता था अपने bedside में to keep a condom box. Right. Because of the kind of the packaging जो उसमें Right. था. I have 2 kids and bedside drawer कभी भी कोई भी खोल दे. So and they are very young. सेकेंड थिंग व्हेन हम जब कस्टमर्स से बात करें, जब हमने लॉन्च किया था उस टाइम पे, एंड दिस इज़ द थर्ड वर्जन ऑफ द पैकेजिंग. ओके. सो जब फर्स्ट वर्जन में जब बात किया था तब पता चला कि इवन दे आर वेरी अनकम्फर्टेबल. वुमेन इन जनरल डू नॉट लाइक. राइट. आई रिमेंबर एक वुमन ने तो ये भी बोला था कि इसको देख के भी कुछ नहीं होता है तो क्यों डालते हो. मतलब क्या लॉजिक क्या है टू कीप सच डेरोगेटरी पिक्चर्स. क्या उसमें क्या मज़ा है. राइट. तो दैट्स द रीज़न कि हमने ये डिसीजन लिया था. फिर जब वापस से कस्टमर्स से बात हुई, जब समझ में आया कि काफ़ी लोगों को ये मेडिसिनल फीलिंग दे रही है, इट इज़ नॉट रियली काइंड ऑफ द फीलिंग, तब फिर रीइटरेट किया एंड देन वी लॉन्च्ड दिस पैकेज. राइट. एंड I can see that we have dotted condoms, we have ultra thin, and then dotted ribbed contour shaped. What is dotted ribbed contour shape? This is contour shape is the shape of the condom will have a pinch in between. Okay. To enhance the pleasure. Right. It has also got dots and it has also got ribs. Right. So instead of using other kind of materials, you are काफ़ी आपके प्रोडक्ट पे आपने ज़्यादा काम किया है. Exactly. Instead of introducing other external materials Yes. which will harm us. Right. अब बात करते हैं उन प्रोडक्ट्स की जहाँ पे अब ब्लू केयर्स वेंचर करने वाला है और भी प्रोडक्ट्स आप लोग अपने इस वेलनेस ब्रांड में ऐड करने वाले हैं. प्लीज़ उसके बारे में बताइए. So yes, as a women wellness brand and as I said कि we are a mid-age focused segment. So we've again reached out to about 400 customers and उनकी journey का समझे कि what are their issues. So sexual wellness is a very small aspect for it. There are other issues like anxiety, stress, sleeplessness, body pains, fatigue, etc. And which again these women are not able to really express and share. Right. And they are suffering silently because menopause is a taboo. Right. Menopause is a taboo and कोई उसके बारे में बात नहीं करना चाहता है because अभी तक हमारे एज में ये बिलीव किया जाता है कि menopause is something जहाँ पे women will age old and that's it. But rather than that, अगर एक अप्रोच पे बात किया जाए, I am a menopausal woman and age brings more grace. Right. And that's what we are trying to do. Right. We're trying to bring in that awareness, we are trying to bring in that information, and we are trying to bring in that comfort for the women of my age, my tribe. Right. So क्या प्रोडक्ट्स हम सोच सकते हैं कि ब्लू केयर्स से हम क्या क्या प्रोडक्ट्स की उम्मीद रखते हैं? So all the issues that women faces during this phase, हम उस सारे issues के लिए solutions के एक we have shortlisted and हर एक issue को we are trying to solve it. Right. Now, if I go back to your journey when you started Bleu Cares, how many people approached you and said, women and manufacturing condoms? I have lost the count. I have lost the count. तो कैसे समझाती थी आप उनको कि आप क्यों कर रही हैं, किस लिए कर रही हैं? इनिशियली थोड़ा ट्राई किया था समझाने का. हाँ. बाद में रियलाइज किया कि दे हैव देयर ओन माइंडसेट. राइट. एंड इट्स ऑलवेज इनटू द नेगेटिव थिंग जो माइंडसेट है बिकॉज कॉन्डम्स एंड वुमेन डोंट गो टुगेदर. हाँ. राइट. बाद में एफर्ट ही नहीं लिया. राइट. एंड दैट टू स्टार्टिंग इन 2020 लाइक during the just before the pandemic, the peak of lockdown and pandemic. तो वहाँ पे कैसे आपने approach किया? Was it a bootstrapped or you got the? It is still a bootstrap. Okay. And what are your plans for investing in approaching investors? Let us launch the new products and then we will get into this. और शुरुआत में कैसे अप्रोच किया आपने कस्टमर्स को? बिकॉज उनको कैसे एडुकेट किया कि दे डोंट मूव टूवर्ड्स द कन्वेंशनल वर्ल्ड एंड ट्राई आउट व्हाट यू आर? सो फॉर दैट सिंस द प्रॉब्लम वाज सो बिग, इनिशियली तो हमने मार्केटिंग में स्पेंड भी नहीं किया था. अच्छा.
बिकॉज इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी जिसके हाँ. बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा हाँ, था, हाँ. तो इनिशियली तो खुद ही कस्टमर्स आ रहे थे आपने कहाँ कहाँ प्रोडक्ट्स छोड़े थे, लाइक अमेजोन? अमेजोन पे हमने किया था एंड वेबसाइट पे किया था। अच्छा. एंड हम तो खाली अवेयरनेस का बात कर रहे थे, हमने एडवर्टीजमेंट स्टार्ट ही नहीं करी थी, ओके. खाली अवेयरनेस ही कर रहे थे, उसमें अपने यहाँ पे कस्टमर्स आ रहे थे। अमेजोन में भी खाली अवेयरनेस चल रहा था, राइट. हमने इनिशियली मार्केटिंग स्पेंड ही नहीं की है। और यू आर अवेलेबल ऑल ओवर इंडिया? यस। ओके. एंड सो नाउ व्हाट इज द अप्रोच टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट्स? अभी मार्केटिंग कर रहे हैं? नहीं, अभी क्या प्लान है? अब वी आर इनटू द मार्केटिंग एंड बिकॉज आप एक स्मॉल स्केल तक आप कर सकते हो विदाउट मार्केटिंग, बट अभी भी अवेयरनेस इज व्हाट आवर फर्स्ट Right. अप्रोच इज, Right. rather than the marketing, and we want to create a lot more awareness about the subject, Right. about the topic that we are talking. Right, right. Okay. So once you will add on more products related to menopause and other issues, you know, in the women wellness segment, उसके बाद क्या प्लान्स हैं इंडिया में? इसको आप कहाँ पे देखते हैं? वुड यू बी गोइंग, यू नो, इन द मार्केट्स अब्रॉड, लाइक, because I'm sure it will be needed everywhere in the world. Of course it's needed Yeah. everywhere, but इतना बड़ा इंडिया मार्केट, Right. we have to first think of capturing it. Right. रूरल तक तो अभी तक जाना ही नहीं है। Right. तो रूरल में एक बार जाके, because Right. the issue इतना बड़ा है, Right. so rural needs to be tapped, Right. urban needs to be tapped, and then we can think of going into the others. Right. And I'm sure जब आपने ये पूरा आइडिया आया, आपको ये ब्रांड शुरू करना था, तो you must have spoken to your husband. What was his reaction? You'll be surprised, I come from a joint family, so not even husband, I had to speak to my father-in-law, mother-in-law, and even my mom, dad. Initial reaction was like kind of hesitant, but then eventually they understood the problem and they supported me. Right, right. So it was not much of a struggle, Okay. but yeah, initially एक बार तो शौक था। Right. And when you are hiring, now I'll just ask you something about, you know, hiring people. When you are hiring people for your brand, what are you looking into? Like, आप किस basis पे लोगों को अपनी टीम में ऐड करती हैं? Because I'm sure mindset भी बहुत ज़रूरी होता होगा एक ब्रांड को आगे लेके जाने के लिए। तो what do you look into? More of a hustlers rather than like who are more into kind of courage to do कुछ अलग करना है, who associated with the cause. So most are women and they are like more also going through some of these issues and they can really relate to it. Okay. Okay. So it's never like a experience or experience does count, but it's the attitude. Right, it's the attitude mainly. Yeah. Yeah. Thank you so much, कोमल जी, हमसे बात करने के लिए. And you know, the whole idea of starting these interviews was because I'm sure I feel that, you know, there is a lot to learn from women and women entrepreneurs and CEOs and directors. और अगर हम एक दूसरे से ही लर्न करें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं. तो थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए, हमसे बात करने के लिए. एंड आई एम श्योर कि जो भी ये वीडियो देखेगा दे विल लर्न अ लॉट अबाउट फ्रॉम योर स्टोरी. So please go and check out Bleu Cares website and you will get more idea and you will get more educated about the product as well as the problems जो सिर्फ हमारे देश के नहीं, world over women face these problems by using these condoms that very easily available in the market. And keep checking their website because काफ़ी नए products भी available होने वाले हैं, add on होने वाले हैं उनके website पे. Thank you कोमल जी हमसे बात करने के लिए. And best of luck for your venture. And I hope जैसे आपने कहा कि अभी इंडिया को टैप करना है, Tier 1, Tier 2 villages में जाना है, उनको बताना है Bleu Cares के बारे में. I hope you get all the success. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Thank you.